Coming up, 4 runs required. It's a 6, and Pakistan have won. Australia have won the World Cup of 2007. Australia are the World Cup champions of 1999. What a victory for the Sri Lankans. A fantastic effort. Pakistan wins the World Cup. A magnificent performance. Here's the man who's been largely responsible for us over the last. The first World Cup. That is Australia's joy. And England. Hello to all of you, and once again Dr. Adnan says you welcome on the Match Point. Another episode full of stats, what happened in this decade in the home of cricket and around cricket from 2010 to 2020. And of course we are discussing what happened back in the last year 2019, but these are all the stats which have been gathered by the team Match Point for you exclusively on the EAWAZ from 2010 and from where we are standing right now 2020. And the most happiest thing along with these stats again for you guys and again for all the followers, the happy point that cricket comes home. Cricket is back in the home. Sri Lanka, Bangladesh finally visiting Pakistan, and then the full blossoming seasons of the Pakistan Super League, full semi-finals, finals, the league games, all the things will be played in the Pakistan. So going back to the stats though, which we were discussing in the last show, हम विकेट कीपर्स की बात कर रहे थे जहाँ पर हमारा तसलसल जुटा था लास्ट शो में, और वहीं से बात को आगे बढ़ाऊंगा कि द टॉप ODI विकेट कीपर्स ऑफ द ईच डेकेड बाय द डिसमिसल्स मेड 1970s में अगर देखा जाए तो रॉडनी मार्श जो है, ही वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट विद 35 dismissals in the 21 matches, while 1980 Jeffrey Dujon 181 in 147, and the 1990 it was the era of Ian Healy when he did 212 in the 147, and then it came the 2000s when the Adam Gilchrist all in one, and Adam Gilchrist, the master blaster, the champion batsman from the Australia, the champion wicket keeper and the opener from the Australia, 362 would you believe in 211 games, and then MS Dhoni in the 2010s era in the 242 in the 196 games. But still in all these decades which we were discussing from the 1970s until today's date, no one is being able to beat Adam Gilchrist. And next come most dismissals as a wicket keeper in ODIs this decade. MS Dhoni 242 in 196 matches, Jos Buttler 202 in 141 games, and then comes the Sri Lankan skipper and the Hall of Fame Kumara Sangakkara with the 188 dismissals in only 142 games, and then Mushafiqur Rahim 175 in the 145 games, and Deacock
166 dismissals in the 114 matches. And then if we will jump on the number of the ODIs played and where we will go number of the ODIs played in each decade. अब यहाँ देखिएगा फ़र्क कि हम देखेंगे कि 1970 की दहाई से लेके कितना फ़र्क आया. अब हम 2020 पे खड़े हुए हैं. अगर मैं 1970 का आपको हवाला दूं जहाँ पर ODI मैचेस का आगाज़ हुआ था नया, पाकिस्तान भी इसी डेकेड में अपना पहला मैच खेला था. 1970s के अंदर 82 गेम्स वर प्लेड एंड 1980s का जो एरा था वहाँ पर 516 ODI गेम्स खेले गए. एंड देन इट केम द 1990 जहाँ पर 9 के फिगर में ODI गेम्स आ गए. 933 ODI मैच जो हैं इस एरा में खेले गए. एंड देन केम द 2000s. उसके दौरान इसमें मज़ीद इजाफा हुआ और 1405 1405 गेम्स जो हैं वो इस दौरान खेली गई. एंड देन इट केम द 2010s जिसमें 2019 तक हमने अरसा इन्वॉल्व किया है. 1287 गेम्स जो हैं इस डेकेड के अंदर जो हैं वो खेले गए. टॉप ODI ऑलराउंडर अगर हम निकालें ईच डेकेड में तो ये बड़ा एक कमाल का हमने चीज़ें जमा की आपके लिए कि ODI ऑलराउंडर जो है आजकल वो हर टीम की एक ज़रूरत है. चाहे वो हफीज़ हों, चाहे वो शकीब हों, वो किसी न किसी तौर पे टीम के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होती है. आल्दो कि पहले उसका इतना रवाज नहीं था, लेकिन अब आपका बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर होना आपके लिए मस्ट है. 80s की दिहाई में वन एंड द ओनली द पाकिस्तान PM बट देन पाकिस्तान स्किपर इमरान खान द ग्रेट 2653 रन एंड 144 विकेट्स. अगर मैं 1990s में आऊँ तो सनात जयसूर्या जिनकी वर्ल्ड कप की एफर्ट्स 96 की कोई नहीं भूल सकता. बॉल के साथ भी और बैट के साथ भी सनात जयसूर्या में 5083 रन और 174 विकेट्स. एंड देन कम्स द 2000 का एरा जहाँ पर जैकिस कैलिस फ्रॉम द साउथ अफ्रीका जो है वो छाए रहे. 7859 रन विद 192 विकेट्स. और उसके बाद 2010 के जो एरा था वहाँ पर शकीब अल हसन with 4,276 runs and 177 wickets. Overall 2000 के अंदर जैकिस कैलिस का जो पल्ला था वो इन तमाम ऑलराउंडर्स पे भारी रहा. नेक्स्ट नाउ आई कम ऑन द टॉप ODI ऑलराउंडर्स ऑफ दिस डेकेड. शकीब अल हसन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे 4,276 रन 177 विकेट्स. देन मोहम्मद हफीज़ ऑफ पाकिस्तान 5,740 रन और 101 विकेट. सारा परेरा इसके बाद 2179 and 171 wickets. And then Ravindra Jadeja from India 1987 runs with 171 wickets. And then Mohammad Nabi from Afghanistan 2708 runs and 130 runs. और जेम्स एंडरसन इस दौरान जो आल्दो कि उनका बल्ला भी बड़ा चलता रहा लेकिन उनके बल्ले ने इतना काम नहीं दिखाया जितना कि उनकी बॉलिंग ने दिखाया. लेकिन उन्होंने इस दिहाई के अंदर जितने बेहतरीन रैकेट थे बॉलिंग के, ग्लेन मैकग्रा के और दूसरे फास्ट बॉलर्स के, वो सब पाश कर दिए. इसी दौरान जेम्स एंडरसन ने, मैं आपके बारे में बताना चाहूँगा उनको, ही बिकेम द फर्स्ट स्पेशलिस्ट बॉलर टू प्ले 150 टेस्ट मैचेस. वुड यू बिलीव? ये स्पेशलिस्ट किसी भी किस्म का जो बॉलर है उनका ये पहला मौका था जब उन्होंने 150 मैचेस को अपनी फिटनेस के साथ टच किया. एंड कॉन्ग्रेट्स जिमी एंडरसन फॉर दिस एफर्ट. जेम्स एंडरसन ने जब अपना ये 150वां टेस्ट खेला तो वुड यू बिलीव ही स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर. आज तक जिमी एंडरसन ने अपने टेस्ट के अंदर दोनों इनिंग्स के अंदर सेम बैट्समैन को आउट नहीं किया था. लेकिन ये 150वां मैच इनके लिए इतना यादगार साबित हुआ कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द कैरियर दैट ही गॉट द विकेट्स इन द फर्स्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स इन बोथ इनिंग्स ऑफ द टेस्ट. इससे पहले जिमी एंडरसन ने पहले ओवर में अपनी ये दोनों जो विकेटें हैं ये आज से पहले दोनों इनिंग्स में कभी नहीं ली थी. व्हाट अ वे टू फिनिश द 150th टेस्ट एंड अ स्पेशल ड्रीम फॉर हिम. मोस्ट टेस्ट मैचेस बाय द बॉलर्स अगर मैं कहूँ तो उस हिसाब से जेम्स एंडरसन ने इसको टॉप कर दिया है 150 टेस्ट के साथ. उनके नीचे मुझे शेन वॉर्न नज़र आ रही हैं 145 गेम्स के साथ. स्टुअर्ट ब्रॉड विद 135, मुताया मुरलीधरन 133 मैच और अनिल कुंबले जिनका ताल्लुक भारत से है उन्होंने 132 मैच जो है वो इसमें खेल रखी है. विकेट्स ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल
ऑफ द टेस्ट इन दिस डेकेड, अगर जो लास्ट डेकेड गुजरी है 2010 से लेके 2020 में हम एंटर हो गए हैं, तो द बॉलर्स, स्पेशलिस्ट बॉलर्स टेकिंग द विकेट ऑन द वेरी फर्स्ट बॉल, उनकी मैं लिस्ट लेके आया हूँ आपके लिए। एंडरसन, जेम्स एंडरसन वर्सेस डीन एल्गर, सेंचुरियन में ये इस साल ये वाक़या हुआ। लक्मल वर्सेस केएल राहुल, कोलकाता 2017 में यह वाक़या हो चुका है। मिचेल स्टार्क वर्सेस कोनुरत्ने गॉल के मैदान में, उनके होम ग्राउंड में 2016 में यह वाक़या हुआ। और लक्मल वर्सेस गेल पलेके में 2010 में यह वाक़या हुआ। और जो सबसे पहला ऐसा मंजर हमें नज़र आया था इस डेकेड के अंदर जो गुजरी 2010 से 19 तक, डेल स्टाइन वर्सेस स्ट्रॉस 2010 में जोहानसबर्ग पे ये पहली मरतबा ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ। बैट्समैन अगर मैं नज़र दोहराऊँ, विद द मोस्ट डबल सेंचुरीज इन द फर्स्ट क्लास मैचेस इन दिस डेकेड, नथिंग मोर देन द चेतेश्वर पुजारा, वन ऑफ द ग्रेट्स इन द इंडियन टेस्ट मैचेस। पुजारा जो हैं वो 10 के साथ इस लिस्ट में सरफहरिस्त हैं, जबकि डोगरा 9, विराट कोहली 7, कुमार संगाकारा और जो रूट इंग्लिश कप्तान जो हैं वो 6-6 के साथ डाउन द लिस्ट मुझे नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आगे मैं बढ़ूँ कि आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था सिक्सेस की स्टोरी, लेकिन वो ओडीआईज़ के अंदर की मोस्ट सिक्सेस इन द टेस्ट मैचेस इन दिस डेकेड। टेस्ट मैचेस में अगर मैं आऊँ तो वहाँ पर ब्रेंडन मैककलम, न्यूजीलैंड के फाइनलिस्ट कप्तान, 79 छक्कों के साथ जो है वो सरफहरिस्त है। एंड द पाकिस्तान हेड कोच मिसबाहुल हक इज सेकंड ऑन दिस लिस्ट with 73 sixes in the this decade in the test matches, and then Ben Stokes with 65 sixes, and then Tim Southee with a 60, and David Warner down the list with a 56 sixes. And now the big one, the Boxing Day test, जिस पे हर क्रिकेट शायक की नज़र होती है, and every cricket lover wants to see the Boxing Day test and the Boxing Day stats. Boxing Day का stats एक लेके आया हूँ कि the most man of the match on the Boxing Day test at the MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर Boxing Day टेस्ट खेलना जो है वो बहुत बड़ी रवायत और बहुत बड़ी समझा जाता है क्रिकेट की में हिस्ट्री में कि इट्स एन ऑनर। इस डेकेड के अंदर कितने खिलाड़ियों ने मैन ऑफ द मैच दिया और कितनों ने बॉक्सिंग डे पे मैन ऑफ द मैच दिया, ये आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मैच पॉइंट। ट्रेविस हेड ने अभी लेटेस्ट, आपको ये तो मालूम होगा कि 2019 में जो आखिरी MCG का बॉक्सिंग डे टेस्ट का मैन ऑफ द मैच था वो ट्रेविस हेड ने लिया। लेकिन ये रवायत जब शुरू हुई 2000 की दहाई में, जब मैचेस शुरू हुए, हम 2010 से इसको कैलकुलेट करें तो 2010 में जोनाथन ट्रॉट फ्रॉम द इंग्लैंड on the MCG took the first Boxing Day in this decade, and then Pattison 2011, Mitchell Johnson जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, फास्ट बॉलर्स जो आजकल कमेंट्री के प्राइस संभाल रहे हैं, 2012 मिचेल जॉनसन ने ही पे 2013, रायन हैरिस 2014, नेथन लॉयन 2015, स्टीव स्मिथ 2016, लेस्टर कुक 2017 एंड जसप्रीत बुमराह 2018 में, जब भारत की टीम और विराट कोहली की टीम दुनिया क्रिकेट की पहली एशियन टीम बन गई जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डिफीट, ना सिर्फ डिफीट किया बल्कि सीरीज डिफीट की। बुमराह बिकेम द मैन ऑफ द मैच, एंड नाउ द लेटेस्ट वन, एज आई टोल्ड यू, ट्रेविस हेड 2019 में आखिरी इस जैकेट का मैन ऑफ द मैच लेके गए। द बॉक्सिंग डे मोस्ट विकेट्स इन द इंटरनेशनल मैचेस इन 2019, 99 by the Pat Cummins, 35 games. What a year to finish for the Pat Cummins. 2019, a wonder year for him. But although there was a big chance to win the ICC Cricketer of the Year award, but the Ben Stokes finally took this from Pat Cummins. Mohammad Shami 77 के साथ 77 विकेट्स के साथ उन्होंने 30 मैचों में यह कारनामा सर अंजाम दिया। मिचेल स्टार्क विद 77, ट्रेंट बोल्ट 63 एंड केजेसो रेबादा विद 57, बट पैट कमिंग्स रिमेन the top of the list with the 99, one short of his 100, but he took the record. Highest by a spinner अगर मैं देखूँ, क्योंकि इसमें फास्ट बॉलर भी थी और मिक्स हम बात कर रहे थे फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की। अगर मैं स्पिनर्स की बात करूँ तो नेथन लॉयन एंड राशिद खान with 56 wickets each was a record in the 2019 in the international matches. Most test wickets in each year this decade. अगर मैं बात करूँ 2010 में ग्राम स्वैन द स्पिनिंग विजिट फ्रॉम द इंग्लिस्तान जो है उन्होंने 64 विकेट्स लिए। 2011 अजमल का साल था, सईद अजमल 50 विकेटें। रंगाना हेरात 2012 में 60,
स्टुअर्ट ब्रॉड 2013 में 62 विकेटें ली, जबकि 56 रंगाना हैरात अगेन 2015 में एशवन 62 एंड 2016 अगेन एशवन 72, नेथन लॉयन 2017 63, रबादा 52 in the 2018, and finally 2019 Pat Cummins, one and only, with a 59. Last stat before going to the break, the most international wickets in each year के बाद मोस्ट ODI विकेट्स ईच ईयर दिस डेकेड, जहां पर शकीब अल हसन 2010 में 46 विकेट्स, मलिंगा 2011 में 48 विकेट्स और फिर मलिंगा ही 2012 में 47 विकेट्स, सईद अजमल 62 विकेट्स इन 2014 शामी और मेंडिस जो है उन्होंने शेयर किया ये रिकॉर्ड 38 विकेट्स, मिचेल स्टार्क 41 in 2015, and then Adam Zampa from Australia 2016 with 30 wickets, and then it was the arrival of the Champions Trophy and one and the only Pakistan's Hassan Ali in 2017 45 wickets, Rashid Khan 2018 48 wickets, और इस साल 2019 में शामी with the most ODI wickets 2019 में 42 के साथ। बातों का सिलसिला जारी रहेगा और स्टैट्स का सिलसिला जारी रहेगा। इस ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। यू आर वॉचिंग मैच पॉइंट एंड यू कैन फॉलो मी on Twitter with the Dr. Adnan Khan, and you can follow me on the Facebook as well as on the YouTube with the Greatest Empire USA, and of course you can WhatsApp me with the +1 786 544 5566. You are watching Match Point and these feeds are exclusively for EAWAZ, and I will be right back. Welcome back on the Match Point. हम डिस्कस कर रहे हैं stats from the 2010 to 2019 as we are in 2020. So once again going to the next stat quickly, most test runs in each year this decade. 2010 की बात अगर मैं करूं तो one and the only सचिन रमेश तेंदुलकर from भारत 1562 runs in that decade, and then 2011 Rahul Dravid का साल था 1145 in that calendar year, and 2012 Clark from Australia 1595, and then again Clark showing the domination in 2013 1093 1093 रन उन्होंने बनाए, एंड देन कुमार संगकारा 2014 में 1438 रन, और फिर स्टीव स्मिथ 2015 में जब वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता he was dominating Australian team like anything 1474, and then Joe Root in 2016 with 1477 runs, and then Steve Smith again dominating in 2017 before the ban with 1305 रन उन्होंने बनाए कैलेंडर ईयर में, and then it was a year of 2018 विराट कोहली Indian captain 1322, and Marvelous Labuschagne 2019 1104. What a year this was for the Pat Cummins and the Marvelous Labuschagne. What a find for the Australia, and Labuschagne has to go a long way in his career, but he was dominating 2019 like anything. Most international runs if I say each year this decade. इंटरनेशनल रन्स के अंदर इस डेकेड्स के अंदर 2010 में हाशिम आमला 2307, 2011 में संगाकारा 2267, माइकल क्लार्क 2012 में 2251 रन्स, एबी डिविलियर्स 2013 में 2181 फिगर्स, एंड कुमार संगाकारा अगेन इन 2014 2868, and then Williamson from the New Zealand 2015, the finalist team, the New Zealand team 2692 runs in the calendar year, and then would you believe what happened from 2016 to 2019? It's the always one word, the batting knows one word, the batting mystery of Virat Kohli 2016 2595, 2017 2818, 2018 2735, 2019 2455. What a way to finish the runs. जो रन्स का तसलसल था इस डेकेड में विराट कोहली से बेहतर फिनिश इससे कोई नहीं कर सकता था। मोस्ट ओडीआई रन्स ईच ईयर इन दिस डेकेड। अगर मैं ओडीआई पे आऊँ तो हाशिम आमला से ये कहानी शुरू होती है 2010 से 1058, कोहली 1381, 2011, 2012, संगाकारा 1184, एंड देन मिसबा 1373 इन 2013, 2014 संगाकारा 1256, 2015 Martel Guptill 1489, David Warner in 2016 with 1388, and 2017 Virat Kohli 1460, 2018 Virat Kohli 1202, and 2019 it was the year of the Rohit Sharma with the 1490 runs. And now if I go to the top two run getters in the ODI in the last 3 years, what an amazing year for the team blue. 2017 Kohli Rohit, 2018 Virat Kohli Rohit Sharma, 2019
Virat Kohli, Rohit Sharma. And then the most T20 runs in each year this decade. 2010 में उमर अकमल 441, Watson 2011 में 195, and then Martin Guptill 472 in 2012, and then Ahmed Shehzad 2013 347, 2014 में Hales 397, 2015 Mohammad Shehzad from Afghanistan 297, and then 2016 Virat Kohli 641, Yvonne Lewis 357, 2017, 2018 Dhawan ka saal 689, and then again the 2019 Sterling 748 runs. Most T20 wickets in each year this decade. 2010 में Nannies 27, 2011 Hafiz 10, 2012 Ajmal with a 25 scalps in his name, and then Nagoshi in 2013 with 14, Samuel Badri 2014 19, Hassan Malik 2015 16, Bumrah 28 wickets in 2016, Chahal 23 wickets in 2017, Chai 31 wickets in 2018, and finally Glover and Lameshan, the Nepal bowling sensation in 2019 with a 28 wickets each. Highest individual score in the T20s each year this decade is 2019 Hazratullah Zazai 168, down the list 2018 Aaron Finch 172, 2017 Lewis 125, Maxwell 2016 145 not out, Duplessis in 2015 119, Hales 116 not out 2014, and down the list McCallum, Dilshan, and again McCallum with a 123, 104, 116 in 2013, 14, 2012, 11 and 10. And now I am proceeding to the highest individual scores in ODI in each year this decade. 2010 Tendulkar 200 not out was the maximum score, and then 2011 was the year Virender Sehwag with 219 runs, the double century, and then 2012 Virat Kohli 183 runs against Pakistan, the match-winning knock. 2013 Rohit Sharma 209, and then that was the ultimate in 2014. Again Rohit Sharma, the hitman, and this time, would you believe, 264. Still a record to beat in the ODIs. And then Martin Guptill 237 not out 2015. Deacock 178 2016. Rohit Sharma 208 not out 2017. Fakhr Zaman 210 not out in 2018, and then Campbell 179 in 2019. So hitman Rohit Sharma taking the lead with 4 such amazing knocks in his career in this decade. What a lucky man he was in this decade. Highest individual scores in the test each year in this decade. 2010 Gale 333 the knock. Then the Lester Cook 294 2011. 2012 Clark 329 not out. Smith 2013 234. Sangakkara with 319 triple century in 2014. What a way to finish the 2014. Everywhere he smashed the records. ODI, test matches, everything. He broke the record in that year, Kumar Sangakkara. And then the Taylor 219 2015, Nair 2016 303, Lester Cook again 2017 244, and Latham 2018, and then David Warner 335 not out in 2019. What a way to finish the figures against Pakistan in the match-winning knock. Best T20 figures each year this decade. Then the 2010 Tim Southee 5 for 18, 2011 Mendes 6 for 16, 2012 Mendes 6 for 8, Umar Gul 2013 wow 5 for 6, and then Rengana Herat in 2014 5 for 3, David Wassi 5 for 23 2015, and then Imad Wasim 2016 5 for 14, and then Chahal 6 for 25 2017, and Paul 5 for 15 2018, and then Chahar 6 for 7, would you believe, 2019. This is the best one in this decade. Best ODI innings figures in each year this decade. If I go, Umar Gul 6 for 42 2010, Roach Cameron 6 for 27, Pereira 6 for 44 12, 2013 Afridi 7 for 12, Bini 6 for 14 15, Saudi 7 for 33, and then 2016 Imran Tahir 7 for 45, Rashid Khan 7 for 18 in 2017, 2018 again Imran Tahir 6 for 24, Shaheen Afridi 6 for 35,
closes this decade in 2019. Best innings figures in the test now in each year this decade. Dale Steyn 7 for 51 2010, Lange 2011 7 for 81, Ajmal 2012 7 for 55, Kyle Abbott 2013 7 for 29, and then Rengana, Herath, Broad, Bishu and Loin in 2014, 15, 16, 17, 9 for 127, 8 for 15, 8 for 49, 8 for 50, and the top two Maharaj 9 for 129 2018 and Roston Chase 80 60 for 8 in 2019, closing the decade. Highest individual scores in tests this decade, triple centuries. McCullum 302, Azhar Ali not out 302, 303 Nayyar, Hashim Amla in this decade 311, Kumar Sangakkara 319, and now the top three 329 not out by Clark, Gale 333, but the one of the best in the business, David Warner 335 not out, take a bow. And now the most ducks in test in this decade, Stuart Broad in the top of the list with the 33 ducks in this decade, James Anderson 25. So the English pacers, the top pacers, sharing between them 33 plus 25, nearly 60 ducks, and then Ishant Sharma 24, Pradeep 18, Lakmal 18 ducks, and Morni Morkel 18 ducks. But if I go with among proper batsmen and all-rounder the most ducks, then the top of the list 14 ducks each with a Moeen Ali and Azhar Ali in the top order batsmen, and Ross Taylor also in the same list with the 14 ducks, and then the Pakistan Smashers batsman Asad Shafiq with 13 ducks is a record in this decade. Most sixes hit in the test in this decade. 52 by Angelo Matthews, Rohit Sharma 52, David Warner 56, Tim Southee 60, Ben Stokes 63, Misbah-ul Haq 73. But the top of the list, Brandon McCullum with 79 sixes, and the balls by 6 ratio, that was 75.86. Most test runs in this decade from 2012 to 19. Alistair Cook at the top of the list with a 8818, 8,818 run. Joe Root on the second, 7359. Virat Kohli 7202, Steve Smith 7164, and then David Warner 7088 runs. Most 5-wicket hauls in the test this decade. Rengana Herath, most fifer जिन्होंने लिए Rengana Herath, would you believe 30 fifers is a record in this decade. And then Ravichandra Ashwin with the 27 fifers, Anderson with the 20, Loin with the 16, Yasir Shah with the 16. और अगर मैं 10 की बात करूँ, most 10 wicket hauls, again one and the only Sri Lankan Rengana Herath, 9 such 10 wickets hauled, which is a record to beat in this decade. Ashwin 7, Rabada Ajmal 4, and Yasir Anderson Swan 3. We will take a short break and we will come back and we will resume that what happens next in the decades. You are watching Match Point and you are tuned in on EAWAZ. Welcome back on the Match Point. और बात हो रही है that who was the best in the business during the last decade, when we say 2010 to 2019, and right now we are in 2020 and the new era of cricket is going on. The cricket comes home again. जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है मैच पॉइंट में, बता जरूर आपको कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो बहाल हो चुकी है, लेकिन जो डेकेड की स्टोरी है वो मैच पॉइंट पे जारी हो सारी है, जो आपको बताना चाहूँगा। तो ब्रेक से पहले जब आपको बता रहा था वहीं से कंटिन्यू करूँगा कि द स्टोरी ऑफ द मैच पॉइंट एंड द स्टोरी ऑफ दिस डेकेड इन द क्रिकेट, मोस्ट टेस्ट मैचेस प्लेड इन दिस डेकेड। अगर टेस्ट मैचेस की बात करती हैं कि सबसे ज़्यादा किसने खेले, तो जो टॉप 5 नाम नज़र आ रहे हैं मुझे, उसमें मैं नंबर 5 से शुरू करूँगा ताकि सस्पेंस जो है वो मौजूद रहे। नंबर 5 के ऊपर है जो रूट, इंग्लिस्तान के कप्तान जो रूट, जिन्होंने 89 टेस्ट खेले इस डेकेड के दौरान, और नेथन लॉयन उसके बाद 95 टेस्ट के साथ नीचे से दूसरे नंबर पर है। अगर आप टॉप 3 की तरफ जाते हैं तो वुड यू बिलीव कि टॉप 3 के ऊपर तीनों नाम जो है वो इंग्लिश क्रिकेटर्स के हैं। जेम्स एंडरसन, जिमी एंडरसन जो है, जिन्होंने अभी आपको बताया था उनकी 150th विकेट के बाद 150th टेस्ट के बारे में, 106 टेस्ट
he has played during this decade, enduring his record of the 150 test by the fast bowler, maximum ever by any fast bowler in the history of cricket. और जो टॉप 2 के ऊपर है, बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि टॉप 2 पे 2 नाम है, दोनों इंग्लिश नाम है और दोनों की टेस्ट की तादाद सेम है। आपको मालूम हुआ कि गोरे एक चीज़ से बड़ा घबराते हैं और वो क्या है? 1-1-1 नेल्सन, 1-1-1। और जब 1-1-1 को देख लें, आज जहानी डेविड शेफर्ड जो है, जब 1-1-1 स्कोर हुआ करता था क्रिकेट बोर्ड की स्क्रीन्स के ऊपर, तो वो एक पैर के ऊपर उछलते थे, दूसरे पैर में भी उछलते थे और वो कहते थे कि हमने जो बैड लक है उसको भगा दिया है। लेकिन ना जाने अब ये बैड लक कैसे भागेगी, क्योंकि अलिस्टर कुक जो है इंग्लिस्तान के साबिक कप्तान और स्टुअर्ट ब्रॉड, जिमी एंडरसन के दूसरे एंड से बॉलिंग करने वाले साथी, इन दोनों ने इस डेकेड के दौरान 1-1-1 यानी कि 111 टेस्ट खेलने का एजाज़ हासिल किया है, जो मैक्सिमम है इस डेकेड के अंदर। मोस्ट कैचेस अगर मैं बात करूँ एज अ फील्डर इन टेस्ट मैचेस ड्यूरिंग दिस डेकेड, तो वहाँ पर नीचे से शुरू करते हैं सस्पेंस के लिए। 59 मैचेस में माइकल क्लार्क फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन स्किपर, उन्होंने 82 कैचेस पकड़ने का एजाज़ हासिल किया। रॉस टेलर जो बेस्ट फील्डर माने जाती हैं न्यूजीलैंड की जानब से, उन्होंने 102 कैचेस पकड़े 76 मैचेस के अंदर। अब जब मैं टॉप 3 में आ रहा हूँ तो वहाँ पर नंबर 3 के ऊपर जो रूट 110 कैचेस के साथ तीसरे नंबर पर है, जबकि स्टीवन स्मिथ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया 117 कैचेस के साथ 72 मैचों के अंदर दूसरे नंबर पर है। एंड टेगाबो पहले नंबर पे, इंग्लिस्तान के साबिक कप्तान कुक 128 कैचेस के साथ 111 मैचेस में सरे फहरिस्त है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जहाँ कैचेस की बातें आ रही हैं, कैचेस विन मैचेस, तो मोस्ट कैचेस एज अ विकेट कीपर नाउ इन द टेस्ट मैचेस ड्यूरिंग दिस डेकेड। इस डेकेड के अंदर ब्रेड हेडन 180, जॉनी बेयरस्टो इंग्लिस्तान का बड़ा नाम 181, डीकॉक 187 और 198 बाय मैट प्रॉयर। लेकिन जो सेहरा रहा किसके नाम रहा? पीजे वॉटलिंग 59 मैचेस में इस डेकेड के अंदर 229 कैचेस एंड ही रिमेन्ड ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट ड्यूरिंग दिस डेकेड। टॉप अगर मैं टेस्ट ऑलराउंडर्स की बात करूँ इस डेकेड के अंदर, मोइन अली जो है वो इस लिस्ट में सबसे नीचे मुझे नज़र आ रहे हैं। 2782 रन्स एंड प्लस 181 इन 60 गेम्स। जडेजा जो है उन्होंने 1844 रन्स बनाए जबकि 211 विकेटें ली। एश्विन 2385 और 362 विकेट्स। बेन स्टोक्स बेस्ट इन द बिजनेस 3787 उन्होंने रन्स बनाए और 139 विकेट्स ली। उन्होंने 60 मैचेस इन्होंने लिए। और जो टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आ रहे हैं मुझे वो शकीब अल हसन 3147 रन्स, 162 विकेट्स इन द 42 गेम्स। दिस इज़ द बेस्ट इन दिस डेकेड, शकीब अल हसन। टॉप बैटिंग पेयर अगर मैं बात करूँ टेस्ट के अंदर, जो बैटिंग पेयर आए इस डेकेड के अंदर, तो वहाँ पर नीचे से चलते हैं पुजारा और विजय 2813, कोहली और पुजारा की जो जोड़ी है 2864, बड़ा थोड़ा मार्जिन नज़र आ रहा है मुझे। उसके बाद नंबर 3 पे जो आती हैं वो मिसबाहुल हक और यूनुस खान की जो जोड़ी है, इन्होंने 2933 रन जोड़े, जबकि कोहली और रेहाने ने 3254 रन जोड़े, जबकि टेलर और विलियमसन इस लिस्ट में टॉप के ऊपर है 3444 एट द एवरेज ऑफ 52.50। अगला स्टैट मेरे पास अब बैटिंग प्लेयर्स के बाद बहुत ही दिलचस्प है एंड यू विल एंजॉय अ लॉट। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द टॉप टेस्ट रन स्कोरर्स इन ईच डेकेड, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेल व्हाट हैपेंड इन 1970, 1980s, 1990s, बट खासा क्या है मैच पॉइंट का कि हम आपको लेके चलते हैं एक सदी पीछे, ताकि आप बिल्कुल मायूस ना हो और क्रिकेट के रिकॉर्ड जो हैं आपको याद करा दिए जाएं। तो ऐसी ही याद दहाने के लिए मैच पॉइंट की टीम ने आपके लिए, प्रोडक्शन टीम ने जमा करके रखे हुए हैं ज़बरदस्त किस्म के स्टैट्स, और जो मैं डेट पैक करूँगा द बेस्ट टेस्ट रन स्कोरर्स एंड द टॉप टेस्ट रन स्कोरर्स, इट विल बी फ्रॉम द 1870s जब क्रिकेट का आगाज़ हुआ। 1870s बैनरमैन 239, द बेस्ट इन द बिजनेस इन दैट डेकेड। 1880s के अंदर श्यूजबरी 963 रन्स। अब ये देखिए कि असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से रन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
1890s स्टीव डार्लिंग 1139 रन इन्होंने स्कोर किए इस डेकेड के अंदर। फिर 1900s की डेकेड आई, 1900s के अंदर जॉन ट्रम्पर 1953 रन इन्होंने बना छोड़े। उसके बाद जैक हॉब्स, बड़ा नाम इंग्लैंड का, 1910 की डेकेड के अंदर 2031 रन इन्होंने बना छोड़े। 1920s में सुटक्लिफ 2960 ड्यूरिंग दिस डेकेड। 1930 वन ऑफ माय फेवरेट्स वॉली हेमंड्स 5194 रन इन्होंने बना छोड़े। 1940 निक कॉम्पटन 2664, बड़ा नाम इंग्लैंड का, इन्होंने इस डेकेड पे अपना पल्ला भारी रखा। एंड देन केम द 1950s when the Harvey was the leading runs getter 4573, and then Barrington in 1960 6397, and then 1970 where Sunil Gavaskar from the India came on the top with 5647 runs. And then 1980s Alan Border, the great Australian skipper and the first one to pick the World Cup for them in the 1987, 5647. And then 1990s Alex Stewart from the England 6407. And then in the 2000s Ricky Ponting, Australian skipper, 9458. This is maximum runs by any man in any decade since the start of the cricket, what Ricky Ponting has done. And in the 2010s, obviously Cook, the English captain, with 8,818. He was little short to break the record of Ricky Ponting, but he couldn't make the 100 in the last game. That's why he was stuck up on the second. He was stuck up on the best in the 2010, but in the overall in every decade since 1870, he couldn't break the Ponting's record. Now if I go to the top test wicket takers in each decade, I will not disappoint you by telling you that again I will go to the 1870s, to the start of the cricket. 1870s, the top wicket takers in that decade were Spofford, 17 wickets in that decade. 1880s, G. Palmer with 78 wickets in this decade. 1890s, Richardson with 88 wickets in that decade. Mike Noble in 1900 with 89 wickets in that decade. And then Sidney Barnes 1910, 122 wickets in that decade. And then Michael Tate in 1920 with 118 wickets. And then comes Craig Grimmett with 169 in the 1930s. In the 1940, Baxter with 89 wickets. And then I'm up in the list. 1950, the great Richie Benaud. What a marvelous day of cricket. He became the hero in that decade. ये वही डेकेड थी जब इंतखाब आलम पाकिस्तान के स्किपर हुआ करते थे और वहाँ से रिची बेनो जो हैं ऑस्ट्रेलियन स्किपर थे, उनकी टीम पाकिस्तान के दौरे पे भी आई। 165 विकेट्स। 1960 मैकेंजी विद 238 विकेट्स। 1970s अंडरवुड विद 202 विकेट्स। एंड देन 1980s आंजहानी मैल्कम मार्शल, रेस्ट इन पीस फ्रॉम द वेस्ट इंडीज़। जब क्रिकेट में टेरर शुरू हुआ, दहशत की क्रिकेट, 323 विकेटें उस डेकेड में उन्होंने ली। 1990 जब ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो छाई हुई थी, शेन वॉर्न ऑन द टॉप ऑफ दैट डेकेड विद 351 रन्स, 351 wickets. And then 2000, then Mutaya Muralidharan became the most wicket taker ever in the history of the game with 565 wickets. And then Jimmy Anderson broke in all the records in 2010s along with Stuart Broad, 429 wickets in that decade. Now if I go to the top test captains in each decade by number of wins, तो इसमें अगर मैं चलूँ 1870 में अगर मैं देखूँ तो डेविड क्रेगरी with 2 wins, और 1880s के अंदर मर्डॉच और शूसबेरी with 5 wins. 1890 W. Grace from the England with 6 victories. Noble in the 1900 with 8 victories. Jimmy Douglas in the 1910, 8 victories. Armstrong and Chapman in 1920 with 8 victories each. They were sharing this record with them. 1930s Woodford with 14, and then 1940s great Don Bradman, rest in peace, 11 wins as a test captain in each decade. And then 1950 P. May with 18 wins. And then 1960s
4 captains were sharing the win record in the decade. Those were Warren, Jim Laurie, Dexter, and great Gary Sobers with a 9 victories each in this decade. And then 1970 came when Ian Chappell became the champion captain with 15 wins. Clive Lloyd with a 22 wins in the 1980s, 1990, Mark Taylor with a 26 wins, Ricky Ponting of Australia in 2000 with a 42 wins, and then ultimately 33 wins in the decade of 2010 by one and the only Indian skipper Virat Kohli. And then next in the list, we are quickly going towards the end of the show. Top test all-rounders each decade if I go. 1950 K. Miller, 2080 runs, 122 wickets in 37 games. 1960s Gary Sobers, 4,563 runs and 162 wickets in 49 games. And then I go in the 1970 in the Craig with a 3,599 runs, 141 wickets. And then great Imran Khan in 1980s, the Pakistan's PM, but then the Pakistan skipper, 2,433 wickets and 256 runs in 54 games. And then 1990s New Zealander, the Chris Kane, the great all-rounder, 2,026 runs and 150 wickets in the 63 games. And then Jacques Palace in the 2000 with 8,630 runs और 205 विकेटें. ये 1950 के बाद किसी भी ऑलराउंडर का ये बेस्ट एवर रिकॉर्ड है, yet to be broken by Jack Callis. And then Shakib Al Hasan from the Bangladesh, 3,147 runs and 162 wickets in the 42 games. Batsmen hitting sixes in an 1 over in the T20. इसके अंदर ये जो हुआ डेकेड के अंदर, मैं आपको बताना चलूँ, युवराज सिंह वर्सेस स्टुअर्ट ब्रॉड, आपको याद होगा जो 6 छक्के मशहूर ज़माना यूवी के थे. इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 गेम, वर्ल्ड कप गेम 2007. एंड देन रॉस विटली वर्सेस कॉल खेवर, वुस्टरशायर वर्सेस यॉर्कशायर 2017. तीसरी मरतबा जब इस डेकेड के अंदर ये 6 छक्कों का कारनामा सामने आया तो दैट वाज हजरतुल्लाह ज़ाज़ाई वर्सेस अब्दुल्ला मज़ारी और बल्ख वर्सेस काबुल 2018 में ये वाक़या हुआ. और चौथी मरतबा जब इस डेकेड में हुआ तो लियो कॉर्टर वर्सेस एंटन डेविच और कैंटबरी वर्सेस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट. ये सब साइड गेम्स थी, 2020 में हो रही थी. यूवी वर्सेस ब्रॉड इनके अंदर वाहिद इंस्टेंस है where the international fixture was involved. And now towards the end of the show, some more things to tell you. Most runs by an opening pair against a team. अगर मैं बात करूं तो 1152 रन्स जोड़े मेरी बड़ी फेवरेट जोड़ी गॉर्डन ग्रीनेज और डेस्मंड हेन्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. 29 जो थे इनकी जोड़ी ने 29 मरतबा इन्होंने बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ और 1152 रन जो है इन्होंने जोड़े. और उसके बाद अगला बड़ा रिकॉर्ड मेरे सामने आ रहा है, सचिन रमेश तेंदुलकर और सौरव गंगूली 1182 रन वर्सेस साउथ अफ्रीका इन 20 गेम्स. एंड देन द ग्रेट डेविड वून एंड द जेफ मार्श वर्सेस इंडिया 21 गेम्स में इन्होंने 1244 रन जोड़े जो है बेस्ट एवर. और उसके बाद ये रिकॉर्ड बढ़ता गया. एंड देन रोहित शर्मा और धावन ने 1286 रन जोड़े ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 गेम्स में. बट एट द टॉप ऑफ द लिस्ट वंस अगेन वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर डेस्मंड हेन्स, गॉर्डन ग्रीनेज, जिन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा. 1407 रन जोड़े इन्होंने इस क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर. जो टॉप प्लेयर था इन द 22 इनिंग्स, ये बेस्ट एवर है इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट. अभी तक क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी जोड़ी ने एक टीम के खिलाफ 22 मैचों के अंदर 1407 रन नहीं जोड़े. 1407 is the maximum runs by any player against a specific team in the top 8 in the ICC rankings. ICC Umpire of the Year. We are now quickly progressing towards the big ones. Umpire of the Year 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 साइमन टोफल उनके नाम रहा सेरा. उसके बाद 2009, 2010, 2011 अलीम डार के नाम रहा. इस डेकेड के अंदर 2012 आया कुमार धर्मासीना, 2013, 2014, 2015
रिचर्ड कैटलब्रो के नाम रहा ये सेरा 2016। 2017 मारियस एरेस्मस के नाम रहा ये बेस्ट अंपायर आईसीसी का जो अवार्ड है। एंड देन 2018 में दोबारा कुमारा धर्मासिंघा ने ये अवार्ड अपने पास खींच लिया। और 2019 का इस डेकेड का जो आखिरी अवार्ड था वो रिचर्ड इलिंगवर्थ के नाम रहा। Captains of the ICC ODI teams of the year. We are heading towards the big one. ICC ODI teams of the year में 2004 में रिकी पॉन्टिंग जो है वो आईसीसी के कैप्टन करार पाए। 2005 मॉर्वन अतापतु, 2006 श्रीलंका के महान बैट्समैन जयवर्धने उसके कप्तान करार पाए। 2007 और 2008 में रिकी पॉन्टिंग ने ये एजाज़ बरकरार रखा। 2009 में धोनी ने उनसे ये एजाज़ छीना और 2010 में रिकी पॉन्टिंग ने वापस ये एजाज़ लिया। और उसके बाद 2011, 2012, 2013 महेंद्र सिंह धोनी ने रिकी पॉन्टिंग से दोबारा ये एजाज़ खींचा और अपने नाम किया। 2015 में एबी डिविलियर्स वाज द आईसीसी कैप्टन ओडीआई कैप्टन ऑफ द ईयर। और 2016 में और 2017 में विराट कोहली जो है वो आईसीसी ओडीआई कप्तान के तौर पर सामने आए। और सरप्राइजिंगली 2018 और 2019 में भी विराट कोहली वाज द आईसीसी ओडीआई कैप्टन ऑफ द ईयर अलॉन्ग विद मैक्सिमम। रिकी पॉन्टिंग, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का पिछले 20 साल में ये पल्ला भारी है। जब से आईसीसी की ये चैंपियनशिप शुरू हुई और आईसीसी ओडीआई टीम का नाम चुना गया तो विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और रिकी पॉन्टिंग जो है इस पर छाए रहे। इन सब ने 4 मरतबा हुक्मरानी की है एज अ कप्तान। नो द आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2004 में जब ये अवार्ड शुरू हुआ तो राहुल द्रविड़, द वॉल ऑफ इंडिया, got the award in 2004 and then Jack Mescalis and Flintoff in 2005, 2006 और 7 में रिकी पॉन्टिंग इसके हकदार पर पाए। 2008 में चंद्र पॉल, 2009 में मिचेल जॉनसन, 2010 में तेंदुलकर, 2011 में जोनाथन ट्रॉट फ्रॉम इंग्लैंड, 2012 संगाकारा, 2013 में क्लार्क इसके हकदार करार पाए, 2014 में जॉनसन, 2015 में स्टीवन स्मिथ, 2017 और 18 में कोहली ने बैक टू बैक ये जीता। और आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड बिग वन 2019 वेंट टू द बिग मैन बेन स्टोक्स, द मैन ऑफ द ग्रैंड फिनाले, जिन्होंने ग्रैंड फिनाले में न्यूजीलैंड की शिकस्त में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। बेन स्टोक्स वाज द फाइनली आईसीसी Cricketer of the Year for the 2019 and the players who were the part of the ICC ODI 11 of the year most times since 2004। जैसा कि मैंने आपको बताया 8 मरतबा धोनी जो है उसके मेंबर हुए, 7 times एबी डिविलियर्स, जबकि कोहली 6 दफ़ा इसका हिस्सा बने और रिकी पॉन्टिंग 5 दफ़ा, तेंदुलकर, संगाकारा, फ्लिंटॉफ, दिलशान, स्टार्क, रोहित शर्मा 4 दफ़ा इसका हिस्सा बने। प्लेयर्स हु वर द पार्ट ऑफ द आईसीसी टेस्ट 11 ऑफ द ईयर्स मोस्ट टाइम सिंस 2004, डेल स्टाइन 8 दफ़ा, कुमारा संगाकारा 7 times, जैक्विस पैलेस 6 times इसका हिस्सा बने। कैप्टन्स ऑफ द आईसीसी मेंस टीम्स ऑफ द ईयर इन द लास्ट 3 years मैं उठाऊँ बहुत ही अमेजिंग चीज़ आपके सामने आ रही है। इफ़ यू आर अ इंडियन फैन you will be very happy to know this record. Captains of the ICC men's team of the year in the last 3 years. Test team of the year. Who was the captain? 2017, 2018, 2019. Virat Kohli. Captains of the ODI team of the year. ODI के अंदर ICC के 2017, 2018 और 2019 में एक ही नाम। क्रिकेट स्पीक्स वन लैंग्वेज, बैटिंग स्पीक्स वन लैंग्वेज, विराट कोहली। सिंगल हैंडेडली विराट कोहली ने स्वीप किया अपने जितने भी मुखालफीन हैं इनको ओडीआई और टेस्ट के अंदर। मेंस टीम ऑफ द ईयर्स के कैप्टन्स के अंदर लगातार विराट कोहली जो है उन्होंने दोनों पोजीशंस पे टेस्ट और ओडीआई में 3 साल से कब्जा किया हुआ है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन 2020 एंड नाउ द लास्ट record for you in the match point ICC awards 2019 men's cricketer of the year Ben Stokes, test player of the year Pat Cummins with 69 wickets, the best ever season by an Australian in 1 year. ODI player of the year hitman the Rohit Sharma, 4 double centuries in that decade.
Emerging Player of the Year, Marnus Labuschagne. Most runs by in a calendar year by any Australian batsman which were done in this 2019. Associate Player of the Year, Kyle Cozier. And I hope you would have enjoyed the match point. This was it from this decade, what happened from 2010 to 2019, and we hope that 2020 bring joy and the happiness and the message of prosperity for all the fans. Keep watching us on EAWAZ. You can tune us in the North America on the Jadoo boxes, on the IPTV, on all the boxes you can find the EAWAZ. If you can't find us, you can watch me and you can follow me on the Instagram on the Dr. Adnan Khan, DRADNAN. It's a one word Facebook page and the YouTube page with the name of Greatest Empire USA, and of course you can WhatsApp me with the +1 786 544 5566. Numbers will be scrolling down on the screen, you can see. And I hope you would have enjoyed this program. You would have enjoyed the presence of Bangladesh team and Sri Lankan team on the soils of Pakistan. Cricket comes back home. Cricket has been started after the 2009, and the next show of the match point when I will be coming back to you, we will be on Pakistan Super League. Game on hai. The cricket comes back home, and the biggest news that all the matches will be played on the soils of Pakistan for the first time in the PSL since the start of this venture, which we say Pakistan Super League. Dr. Adnan says you goodbye from here. Take care and bye bye. Fantastic. Pakistan win the World Cup. A magnificent performance. Here's the man who's been largely responsible for our goal of the The first World Cup. That is Australia's joy.